गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से एक और वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। मगर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कि करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स हम सबको पता है कि वो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में मेजर फैक्टर है। प्रीलिम्स में लगभग 60-70% जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। और जो हमारा मेंस है, मेंस में तो आप पूछिए मत, इट्स mostly dominated by what current affairs therefore is very important if you want to clear UPSC civil services examination। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है। आपको करना क्या है, सुबह उठ के हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक एक तो पता चलेंगे, ठीक है ना। अब उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के भी काफ़ी अलग तरीके हैं, ठीक है ना। वो हम लोग और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे सोर्सेज क्या हो सकते हैं न्यूज़पेपर के? द हिंदू, वी कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, and we can refer to a website that is called pib.nic.in. Okay, so you can refer to PIB, you can refer to the Hindu or Indian Express. The first two options are the safest option, which जिसमें कि आपकी वाइड कवरेज है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमने देखे भी हैं पिछले कुछ सालों में, they are straight away coming from these newspapers only. So just refer to them. Along with that, this is on your daily basis that you need to do. Along with that, you can also refer to one current affairs monthly magazine, or you can subscribe to my channel, and also the channel will be giving you some current affairs, but for the entire edition you can go to clevernotes.in और वहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई विल अगेन रिपीट, इट्स clevernotes.in। तो आप यहाँ पे जाके you can just check the current affairs and you can subscribe to them for a nominal fees. And if you use the payment link that I have shared in my description box, तो पेमेंट लिंक अगर मेरा यूज़ करते हैं, यू कैन स्ट्रेट अवे हैव अ डिस्काउंट ऑफ अबाउट 10% ऑन वॉट एवर फीस दे आर चार्जिंग। ओके, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स डिस्कशन। एंड ऑल्सो गाइज, लाइक गोइंग फोर्थ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे ये करंट अफेयर्स आपको आ रहे हैं डेली के, on daily basis these current affairs would be shared with you, but there will be two videos. One, first video in the morning, and this video will have short video that will tell you the important news or concepts that you can read from the website. You can refer to Clever Notes. ओके, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं दीज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड दीज कॉन्सेप्ट्स, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड देन अनदर वीडियो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विच विल बी इन द इवनिंग। तो इन दैट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। फाइन, सो ये दो वीडियोज़ आपके आएंगे, दिस विल बी ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो इन कमिंग 1 or 2 days आई विल शेयर द करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज योर करंट अफेयर्स स्टडी एंड यू कैन यूज इट to actually guess the questions coming in the examination, ठीक है ना। तो we'll see how you can form your current affairs strategy without even stressing yourself and keeping yourself up to date. Now let's quickly jump on to the main agenda of this video, that is important current affairs topic for July 1st 2022. The first important topic in the newspaper today was the determination of the value of rupee. Fine, and the second one was the self reliant India fund. So हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। Now let's just first of all see how the value of rupee is determined. Right, now Indian rupee, आपने if you've been reading newspaper lately, you must have seen that Indian rupee has been witnessing
a steady decline this year. Since the beginning of this year, we've seen there have been many factors that are leading to a decline in the Indian rupee value in the foreign exchange market, and it has also, it has lost more than 6% against its value against the dollar since the beginning of 2022. So the steady हमारी decrease हो रही है in the value of rupee, and there is about 6% loss, or 6% loss in the value of the rupee against dollar. Now, second most important data that you can note is that India's foreign exchange reserve is also dropped below $600 billion. Now, दोनों के दोनों facts हमारे लिए important हैं in solving MCQs. You will ask, like, how are these facts going to help us? Now, if you see the previous year questions, okay, now previous year questions, you must treat them as your Bible. So in previous year questions, you will find that in the economy there were questions asked on the value of rupee being depreciated, the value of rupee being depreciated. Okay, so वो इस तरह से था कि there has been a steady decline in the value of rupee, yes or no, you select the correct statement. So if you know this kind of data in which you know that yes, there is a steady decline in the value, or there is a steady appreciation in the value of rupee, then you would be able to solve that question very easily. So आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. Now I come to the reasons behind this. Now हमने बोला कि yes, there has been a decline in the foreign exchange reserve. Now, why this foreign exchange reserve is declining? Why do you think this foreign exchange reserve is declining? Now, RBI, which is the Central Bank of India, now it believes that it is largely due to the steps which RBI has taken. It is largely believed by most of the economists that there are steps that RBI took has led to the reducing foreign exchange reserves. Now let's see what RBI officials say. Now RBI officials is saying it is actually due to the fall in the dollar value of the assets that RBI holds. Now, what assets RBI hold? It holds, that there is various things like gold bullions. It also holds like foreign exchange of other country. So here what asset we are referring to is the forex of other countries. Now, what does this mean? The fall in the dollar value of asset. It means that if let's say a portion of our foreign exchange, let's say it is euro. Now, if the value of euro depreciates as compared to the value of dollar, then actually let's say euro की value at decreased in relation to the dollar, then what will happen? It will automatically reduce the value of euro and the foreign exchange which our central bank is holding. So that is why this RBI is they have given this reason that due to the fall in the value of the assets which RBI is holding against dollar, the foreign exchange with India is holding has also reduced. So that was one reason. Now let's come to the analysis, a little bit analysis that we can do around this determining of the value. Now that the main aim of RBI is to what? To allow rupee to find its natural value. Foreign exchange market के अंदर, forex market में when it comes to determining value of any currency, how is the value of any currency determined? Now इसके हमारे पास कुछ reasons है. क्या reasons है, क्या तरीके हैं जिससे कि हमारी ये value decide होती है? एक जो तरीका है वो है floating exchange rate. क्या कहते हैं उसको हम? Floating exchange rates, ठीक है ना. और दूसरा जो एक और तरीका है उसको हम कहते हैं pegged exchange rate, ठीक है ना. ये कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे.
पर सबसे पहले हम देख लेते फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ना. अभी हमने ये बोला था कि जो सेंट्रल बैंक है, दिस RBI, इट एक्चुअली इंटरवीन्स व्हेन करेंसी destabilizes. Okay, now if you see that it is destabilizing and it is performing very badly, how are you going to intervene and how will you make it right? तो उसमें क्या है सबसे ओके, दिस वन मोर थिंग दैट द मेन पॉलिसी, द RBI पॉलिसी का जो सबसे मेन एम है वो ये है कि इट अलाउज रुपी टू एक्चुअली फाइंड इट्स natural value that is in the market without undue volatility or causing unnecessary panic among the investors. ये बहुत important है कि वो अपनी natural value attain करे, because if there is a panic among the investors, it can lead to further fall in the value of rupee and thus crashing the entire economy, right? So it is very important. So इस situation में what RBI does is that it asks the state run banks to sell dollars in order to offer some support to the rupee. Okay, so dollar है, that is sell off. So by selling the dollar in open market in exchange of rupee, the RBI can actually improve the demand for rupee and reduce the fall of rupee. Okay, now I'll exchange. Actually, you would be wondering what this demand and supply and all that thing is. So let's just first of all understand what this supply and demand and determining the value of currency is. Now I told you, while determining the value of the currency, there are two ways of doing it, right? One of it that I said what was floating exchange rate. So what floating exchange rate does is, in this currency's value, the value is actually determined based on the when it is actually the floating exchange rate, it is actually determined on the supply and demand. Okay, value is determined on the supply and demand of the currency. Okay, so I'll explain how. If the supply increases, the value decreases. Okay, and if the demand increases, the value also increases. So there is a negative relationship between the supply of a currency and its value in the global market, and a positive relationship between the demand of a currency and the value of the currency in the foreign exchange market. Now, if you guys must be reading the basic books on supply and demand while preparing for prelims also. So this thing is actually an opposite of what this actually law of demand and supply का एकदम opposite है ये. ठीक है, so whenever there is a higher demand, the value decreases. This is what the normal is. But now here, in case of the exchange, the foreign exchange, and determining the value of currency, it is actually opposite. When there is a higher demand, there is an increase in the value of that currency. So this kind of determination of the value of currency is called floating exchange rate system. ठीक है ना. नाउ इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी एक्चुअली डिटर्मिनेशन जो है, जिसका जो प्रोसेस है, इसमें देर इज़ वेरी लो और नो कंट्रोल ऑफ द हायर अथॉरिटीज़ लाइक सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट. सो इस प्रोसेस के अंदर दे के नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग. नाउ सेकेंड जो मैंने बताया था, दूसरा जो सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड द पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी. ठीक है ना, लाइक डॉलर को बेस करके योर ओन करेंसी वुड बी डिटरमाइंड, थिंग्स लाइक दैट. सो अब नाउ यू शुड लाइक अंडरस्टैंड. Now we'll come to the main topic where we are going to discuss how the value of rupee is डिटरमाइंड. नाउ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं. फिर हमने ये देख लिया कि हाँ एक्सचेंज रेट है ये. नाउ हमारे टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के. नाउ वी विल ईजिली अंडरस्टैंड हाउ द रुपी वैल्यू इज एक्चुअली डिटरमाइंड. नाउ इंडिया हैज़ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम.
ओके, नाउ यू नो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें कि एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी विद अनदर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड. सो वैल्यू ऑफ एनी करेंसी इज डिटरमाइंड बाय its demand and its supply, and when the supply of any currency increases, its value drops, and on the other hand if the demand increases, its value also increases. So ये simple चीज़ है, floating exchange rate आज हमने देख लिया है. Now at global level the central bank actually determines the supply of currencies, while the demand for currencies depend on the amount of goods and services produced in the economy. ठीक है ना, हमारी कितनी करेंसी ग्लोबल लेवल पर जाएगी, दैट सप्लाई इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स. फाइन. हाउएवर डिमांड जो है वो डिपेंड करेगा हमारे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है. नाउ इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द सप्लाई ऑफ रुपी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स and various foreign assets. So if there is a higher demand to import oil, now what will happen? हमने, you know that India is dependent on oil imports के ऊपर हम dependent है इंडिया में. So if the demand increases for oil, हम लोग ज़्यादा import करने लगे oil, then what will happen? It will lead to increase in the supply of rupee. रुपी की जो मात्रा है, the amount of rupee that is going into global market, it is going to increase. Though that means that the supply of rupee is increasing. What will this lead to? This will lead to lowering or depreciation of rupee. It will lower the value of rupee in the international market. Fine. So this is what happens due to, like, this is actually what the mechanism is happening. Now we'll quickly see other factors that are leading to the reducing or dropping of the values, or factors that actually determine the value of rupee in international markets and the domestic market. So the first one was supply and demand. We've already seen it. Supply and demand हम लोगों ने देख लिया. I've explained that. Second is inflation. Now how does inflation actually affect the value of rupee? See, inflation, it actually brings down the purchasing power. Purchasing power जब reduce होती है country की, it actually devalues its currency. जो चीज़ हम कम पैसों में खरीदते हैं उसी चीज़ के लिए we give out more money. So that means if we are buying something from, let's say, international market, we are importing something, and there is an inflation, we are actually giving out more rupee. So the supply of the rupee is increasing, which is leading to reducing the value, which actually reduces the value of rupee. ठीक है ना, तो inflation does this. Now next factor is interest rates or repo rates. Now interest rates और repo rates कैसे होंगे? देखिए, अगर higher interest rate है, it will mean that investors would actually rush to buy government bonds, right? Then the rupee will be in more demand and its value will also increase. Right. Now opposite happens. If there is, the interest rate is lower, then the demand for the bonds would reduce, thus the supply of money would actually increase. लोग क्या करेंगे, अपने bonds बेच देंगे. Now they will just sell off their bonds, and the supply of the rupee will actually increase, thus leading to the decrease in the value of rupee also. Now the next factor that you can just note down is the level of current account deficit. Current account deficit से आप क्या समझते हैं? Current account deficit actually represents country's foreign transaction. It implies that a country is spending more money on importing goods rather than earning money via exports. Goods and services को import हम ज़्यादा कर रहे हैं, export हमारा कम है. Current account deficit वहाँ होता है. Now since importing of goods and services is more than exporting, and importing have to be paid in foreign currency, this actually increases the demand for that currency, and hence the value depreciates with respect to the rupee. ठीक है ना, we are paying more. अगर हम
let's say we are paying in dollar, then the demand for dollar would be increasing and thereby increasing the value in the foreign market. डॉलर की जो डिमांड इंक्रीज हुई तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई. तो दैट इज वाई करंट अकाउंट डेफिसिट इज बैड फॉर कंट्रीज वैल्यूएशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर यू कैन जस्ट नोट डाउन इज द it's import and export of gold. Import and export of गोल्ड. नाउ अगेन द सेम थिंग, डिमांड एंड सप्लाई. देखिए, अगर हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे वी विल एक्चुअली पे ऑफ इन दैट पर्टिकुलर करेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड, लेट्स से डॉलर. जो डॉलर की जो हम लोग की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट विल एक्चुअली लीड टू व्हाट? It will actually lead to its higher valuation, thereby depreciating the value of our currency, right? So therefore, if a country has a high demand for gold and we are importing more gold, it will actually impact our current account deficit also. So यहाँ से हमारा current account deficit है, import increase हो जाएंगे, exports decrease हो जाएंगे. So this will actually it will actually lead to higher current account deficit, thereby reducing the value of rupee in the international market. And also when the prices of gold increases in international market, the strength of Indian rupee would accordingly go down. Why? Because we have a higher import of gold in India. You know that we like that yellow metal, so that is why all ladies, they're all decked up in gold and everything, they want gold. So हमारा demand ही इतना ज़्यादा है, that is why we tend to have a higher current account deficit. Now the next point that we have is amount of public debt. Now what is public debt? It is actually the huge debt. Now how does it impact the country? If it has high level of budgetary deficit and it is borrowing to cover its cost, it will actually result in lower currency. Now let's just see this concept of public debt. Now a country with huge public debt carries a higher risk of inflation also. Okay, now it must either print new currency notes to pay off the debt, or it increases the sale of securities to foreign investors, hence lowering their prices. अगर हम नए currency notes print करेंगे, it will lead to an increased inflation. Now अगर हमारी country, if let's say any country's public debt is higher, it will actually reduce the investors confident in country's ability to pay that debt also. Now if their confidence is low, then they will not be willing to buy the securities, and securities which actually are dominated by the country's currency. So therefore, in order to pay off this public debt, more currency notes would be printed and thereby increasing the inflation, and which will lead to the increase in the inflation in the country, right? So okay, now let's look at some of the global factors. हमने देखे कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स जो रुपी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं. अब हम देख लेते हैं ग्लोबल फैक्टर्स दैट एक्चुअली हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ रुपी. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द US फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी. अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है? अगर वो लोग टाइट पॉलिसी रखेंगे, देन इंडियन रुपी विल बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स विल कम इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड दे विल ट्राई टू invest in emerging economies, right? However, when it comes to loose or easy monetary policy that US Fed adopts, then US dollar will become more attractive, and then these foreign investors, they will just start pulling out money from emerging economies and they will start investing in dollars instead. So this has been happening since March 2022. This thing has been seen that the Federal Reserve has been raising its benchmark interest rates, and that is causing these investors to seek higher returns to pull away from emerging markets such as India and back to the US. So this has been happening. Fine. Now when this actually happens, it puts pressure on emerging market currencies which have depreciated significantly.
इस तरह से जब फेडरल रिजर्व अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है, इट एक्चुअली depreciates the value of the currency of other emerging economies, and even developed market currencies such as euro and yen, it has actually depreciated since March 2022. So एक मेजर फैक्टर, एक मेजर ग्लोबल फैक्टर है यूएस फेड का monetary policy. Now second one is the dollar index. Now you will wonder what this dollar index is. Now dollar index is an index of dollar's strength weighed against a basket of hard currencies. Okay, अब जो डॉलर एक्सचेंज है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर बट ऑल्सो द वीकनेसेस ऑफ अदर हार्ड करेंसीज. सो द डॉलर इंडेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करता है वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल फ्लो of both FPI and FDI. Okay, now we all know that FDI is referred to as stable money, and FPI जो होता है वो होता है एक तरह से hot money. So it is not that stable. Fine. So when we are looking here, we'll see that something which is not stable, it is actually going to cause a depreciation in the value. If the money is pulled out, then it will actually lead to a depreciation in the value. Whereas if there are stable investments in the Indian market, it will see that the value of rupee is actually appreciated. It will actually attract a lot of foreign investment into the country, that is inflow of dollar into the country then. Okay, so normally the capital flow is also like responsible for a sharp movement of rupee. Fine. And then you must have seen this phenomena recently. We have heard about the currency wars. करेंसी वॉर्स, ये आपने रिसेंट में, ये करंट अफेयर्स में आपने ये टर्म सुना होगा. इट इज़ एक्चुअली एन एस्केलेशन ऑफ करेंसीज डीवैल्यूएशन पॉलिसी अमंग 2 or more nations, each of which is trying to stimulate its own economy. ऐसा हमने देखा था चाइना एंड यूएस के बीच में. देयर वाज समथिंग स्टार्टिंग अप बिटवीन चाइना एंड इंडिया ऑल्सो. इन दोनों के बीच में भी शुरू होने वाला था, चाइना एंड यूएस के बीच में भी हमने देखा था. वाइल इंडिया हैज़ नॉट सीन करेंसी वॉर्स, बट 2015 के अराउंड चाइना ने डेलिबरेटली वीक किया था अपना युआन. Okay, and also this actually led to weakening of other emerging market currencies also. And उन्होंने भी फिर अपने आप को competitive रखने के लिए they did the same thing. They started weakening their currencies. India had no choice but to let INR weaken. So this currency war is also responsible for weakening of currency. Okay, so these were 4 major international or global factors that lead to the influence on the value of rupee. Fine. Now this actually ends this particular topic. Now we'll move on to our next topic. Next important topic is Self-Reliant India Fund. अब now the Self-Reliant India Fund क्यों आज हमें पढ़ना है? That is because around 5,000 MSMEs are expected to benefit from government's 50,000 crore Self-Reliant India Fund. Now let's just see what this Self-Reliant India Fund is. So this SRI fund is a SEBI registered category 2 AIF, that's alternate investment fund, that will operate through mother fund and daughter fund structure. Now what is this operate through mother fund and daughter fund? Now अभी हमारा मदर फंड एंड डॉटर फंड का क्या है, वील डिस्कस गोइंग फर्दर. ओके, नाउ उसके बाद देखते हैं कि ये जो स्कीम है दिस विल एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू it will be implemented through a special purpose vehicle. एक SPV बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा NSIC Venture Capital Fund Limited.
that is NVCFL. So this special purpose vehicle would be created. Now इसके अंदर क्या रहेगा? It will be an 100% subsidiary of NSIC, which is, and what is NSIC? It is a mini Ratna company, Mini Ratna Corporation of Government of India under Ministry of MSME. ठीक है ना? भारत सरकार की MSME की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर दिस इज़ अ मिनी रत्ना कॉरपोरेशन, एंड दिस SPV विल बी 100% सब्सिडियरी ऑफ NSIC. ओके ना? सो नाउ लेट्स जस्ट मूव फर्दर. अब देखते हैं कि इस फंड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फंड? ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अब हम. Okay, now this fund will be actually oriented towards providing funding support to daughter funds for onward provision to MSMEs as a growth capital in form of equity or quasi equity. Okay, now ये जो है एक देखो इसमें क्या होने वाला है, जो इसका स्ट्रक्चर जो है, आई जस्ट टेल यू द स्ट्रक्चर फर्स्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स बेटर. ठीक है ना? तो इसका क्या है, मदर फंड और डॉटर फंड का इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी है. ठीक है ना? फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी. इसके अंदर क्या होने वाला है? इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे होगी कि सेबी रजिस्टर्ड जो है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, that is alternate funds which are also called the daughter funds, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे. एंड कैटेगरी 1 में पहले जाएगा, फिर उसके बाद उस कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में जाएगा, एंड दैट कैटेगरी 2 इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन MSMEs. ठीक है ना? जितनी भी MSMEs लिस्टेड होंगी उसके अंदर आपका ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे. फाइन, दिस इज़ हाउ इट विल एक्चुअली हैपन. सो यहाँ पर वही मैं आपको बता रही थी कि दिस फंड इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू डॉटर फंड्स फॉर ऑनवर्ड प्रोविजन टू MSMEs एज अ ग्रोथ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी. और ये किस लिए क्या क्या करेंगे? इन्हांसिंग दी इक्विटी लाइक फाइनेंसिंग टू MSMEs एंड लिस्टिंग ऑफ MSMEs ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो ये हो गया पहला, लिस्टिंग of stock of MSMEs on stock exchange. स्टॉक एक्स पे लिस्ट करने का हमारा सबसे पहला चीज़ हो गया. देन सेकंड क्या हैगा? फास्टर ग्रोथ ऑफ MSMEs. ठीक है ना? थर्ड हमारा क्या होगा? और मतलब फास्टर ग्रोथ तो देंगे, उसके साथ में इट विल गिव एन इग्निशन टू द इकोनॉमी एंड ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इट विल ऑल्सो गिव पोटेंशियल टू ग्रेजुएट फर्दर. मतलब कि जो पोटेंशियल MSMEs हैं, ठीक है ना, उनको दे विल ग्रेजुएट फर्दर एज नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियन. नेशनल एंड इंटरनेशनल चैम्प्स बनाने की जिसमें पोटेंशियल है वो इसमें भी हेल्प करेंगे. ना चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इट विल हेल्प टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट बाय प्रोड्यूसिंग रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़. रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये फंड जो है वो हेल्प करेगा. नाउ दीज वर द फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फंड. नाउ लाइक आई सेड, नाउ लेट्स जस्ट सी द स्ट्रक्चर. ठीक है ना? पहला मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें वो फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे. ठीक है ना? फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी यूज़ होगी. नाउ द गवर्नमेंट किस तरह से फंड करेंगी? गवर्नमेंट व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू इज़ दैट इट विल बी द सोल एंकर इन्वेस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, and they will give the initial budgetary support of 10,000 CR and as the mother fund. जो मदर फंड रहेगा सबसे पहला वो 10,000 CR रहेगा. उसके बाद रेस्ट ऑफ द 80% ऑफ 50,000 CR will come from the daughter funds. Okay,
this rest of the 80% is going to come from the daughter fund. And how it is going to be raised? It will be raised from outside sources like banks, financial institutions, venture capitals and private equity investors. Institutional investors होंगे, कुछ public sector units होंगी, and then pension funds etc. will try to finance this 80% of the daughter fund. Okay, now what is the eligibility? Now eligibility criteria क्या है जिसके मतलब SRI में जो आपको फंडिंग मिलेगी उसकी एलिजिबिलिटी भी है. तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली ये है कि आपको MSME होना चाहिए डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट विच इज़ ऑल्सो अमेंडेड डे बाई डे. सो इसके अकॉर्डिंगली आप कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है NBFC, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर में है, माइक्रो सेक्टर में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर अदर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे. ठीक है. नाउ इसके लेट्स सी, ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको MSME होना ज़रूरी है. अगर आप कोई और फर्म है, कोई और तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस फंड. Okay, now let's see other features of this act. Now this fund will actually seek to actively encourage different term sheets with a view to ensure non-linear return envisaged from venture capital. और इसमें क्या होने वाला है, इट विल ऑल्सो बी अ फैक्टर इन नॉन मॉनेटरी एसेट्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा. ओके, देन इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. ओके, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा. देन नेक्स्ट वन दैट इट विल डू इज ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगी इसकी. Overall economic development. Next that will happen is establishment of supply chains and resilience. Okay, ये तो आइए अब आगे देख लेते हैं कुछ और इसकी चीज़ें MSME सेक्टर से रिलेटेड. तो अब आज हमने ये देखा कि सेल्फ रिलायंट फंड एक नया फंड क्रिएट हुआ है. तो इतने सारे फंड्स क्रिएट क्यों हो रहे हैं जबकि हमारे पास ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग अवेलेबल, राइट. बट स्पेसिफिकली MSME सेक्टर में ये प्रॉब्लम है कि जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है इट्स नॉट एडिक्वेटली अवेलेबल. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट देयर इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन MSME सेक्टर. सो इसीलिए बिकॉज देयर इज़ limited access to external equity, primarily because there are only handful of players that provide early stage equity capital. Okay, and even if the equity is made available, the uptake would remain low. और उसके कुछ reasons है. सबसे पहला ये कि legal structure जो है MSMEs का, it prevents infusion of external equity. Secondly, there is a smaller investment size per enterprise which tends to increase the transaction cost and also the management cost for equity investors, which actually discourages their investment, and that is why they remain less attractive. Third is that there is also an entrepreneur's concern regarding control and management जो है, मतलब उन्हें ये लगता है कि अगर हमारे कंपनी के अंदर कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो दैट विल एक्चुअली रिड्यूस आवर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. अगर हम जिस तरह से हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से हम कंपनी को रन करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. इसलिए वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली ट्राई नॉट टू टेक मनी और एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी और एनी अदर पर्सन, right. Then another thing is that there is also a low probability of non-linear return that actually discourages the venture capital funding. Okay, now अभी अगर currently आप देखें वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है ना, वो दैट एक्चुअली सीक्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्राइजेज एंड हैव एन एक्सपोनेंशियल
exit stipulation. And it is also noted that venture capitals generally offer early stage funding, but very few venture capitals are available to provide growth funding boost. Now growth funding boost is actually required in MSME sector, because this is the prime reason why MSME sector have not grown with beyond a set limit. Okay, and one more thing is that while listing on an exchange, it actually provides a lot of benefits to MSME and their stakeholders. But MSMEs are often shying away from listing due to increased disclosure requirements and compliance burden. So ये कुछ एक reasons है जिसकी वजह से venture capital funding हमें MSME sector में नहीं मिल पाती है, and they face a lot of problems. Development नहीं हो पाती है MSME sector की, and that is why this self-reliant India fund has been brought out by the government of India, specifically the Ministry of MSME, उसके अंडर ये निकाला गया है. So I hope you've noted down all the important points that I've said. So here we come to the end of this video. I hope you liked the information that I've shared with you. If you have any more queries or concerns, you can get in touch with me. You can call me on the number that is provided on the channel, or you can send an email to me regarding your concerns. If any one of you would like more information, you can subscribe to my channel, or you can drop an email. Okay, you can also subscribe to our current affair PDFs, which will actually have not only the PDF of current affairs, but also we will provide you MCQs. Okay, so वो MCQs will actually help you to understand better and learn whatever you are doing throughout your current affairs study. So that ways you can subscribe to our current affairs magazine on clevernotes.in. So that's www.clevernotes.in. और एक बहुत ही मिनिमल सी सब्सक्रिप्शन फ़ी है दैट यू कैन पे, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू enhance your current affairs coverage. Okay, so if you subscribe using my link which I've given in the description box below, you will get an instant discount of 10%, and you can subscribe anytime, and I will be there regularly uploading the videos, and will help you further with your preparation. Any more queries, you can definitely get in touch with me. Thank you for joining in today. You have a very, very, very good day ahead. Thank you.